प्रणाम, जय जिनेन्द्र। तो આપણે we'll start with the Posh Dashmi Aradhna Vidhi. So today is Posh Dashmi. Posh Dashmi is a 3-day parva to celebrate the Janma Kalyanak and Diksha Kalyanak of Parshnath Bhagwan. So in this Posh Dashmi Aradhna, we do 3 ekashnas. So on the first day, that is Maksar Vad Naum, we do the ekashna of sugar water, sakar no pani. On the second day, that is Makshar Vad Dasam. Today is Makshar Vad Dasam. That is Janma Kalyanak of Parshnath Bhagwan. We do ekashna of kheer. And on the third day, Maksar Vad Agyaras, that is Diksha Kalyanak of Parshnath Bhagwan, we do Bharyu Bhananu ekashna. That means you have to do regular ekashna, but you have to eat less than the regular ekashna. So you have to do kind of Unodari Vrat as well. So it's called Bharyu Bhananu ekashna. So you have to do 3 ekashnas, and the first 2 ekashnas are Tam Chaviyar. That means once you do ekashna, you can drink water only while you are doing ekashna, and then you have to take the Chaviyar Pachkan. So first 2 ekashnas are Tham Chaviyar, and the third ekashna is a regular ekashna. Apart from doing 3 ekashnas on the Posh Dashmi, you also have to do some Aradhna Vidhi. So you have to do 12 swastiks, you have to do 12 fur, you have to put 12 fur, 12 naived. Then you have to do 12 pradakshinas, you have to do 12 khamashanas, you have to do 12 logas no kausarg. And apart from that, you have to count 20 malas. So 20 mala of Parshnath Bhagwan. So you can count mala of Om Rim Parshnath Arhate Namah, or you can count Om Rim Aram Shri Parshnathaya Namah, or you can even count Om Rim Shri Dharmendra Padmati Paripujitaya Shri Sankeshwar Parshnathaya Namah. The idea is to count 20 malas of any of these mantras. So this is the Aradhna Vidhi of Posh Dashmi. So why do we do Posh Dashmi Aradhna? So in Shastra it is said, that those who do this Posh Dashmi Aradhna for a period of 10 years and 10 months can get Shanti, can get Samadhi Maran, and can get Sadgati in the next bhav. So this is the whole idea of doing Posh Dashmi Aradhna. So let's look at the Posh Dashmi Aradhna. So Posh Dashmi Aradhna is done for a period of 10 years and 10 months. And on every Posh Dasam, that is Makshar Vad, Naum, Dasam, and Agyaras, you have to do 3 ekashnas. And every day, you have to do this 12 sastiks, 12 fur, 12 naived, 12 khamashanas, 12 pradakshinas, and 12 logas no kausarg, and count 20 malas on all the 3 days. Apart from that, every month on Vad Dasam, you have to do the same Aradhna. Okay. So you have to do this Aradhna every month for a period of 10 years and 10 months. Apart from that, you have to also do the daily Avashyak Kriya of Rai and Devasi Pratikaman. So that is very important. Okay. You have to do the daily Avashyak Kriya of Rai and Devasi Pratikaman. If possible, you have to do Ashprakari Puja of Parshnath Bhagwan or Snatra Puja of Parshnath Bhagwan on every Vad Dasam. And you have to also do Brahmacharya Kapalan, okay, on every Vad Dasam. So these are the basic requirements, basic things you have to do for a period of 10 years and 10 months. And after you complete this tap, it is said that you have to celebrate this tap with a Swami Vatsalya, Grand Swami Vatsalya, to celebrate the occasion of completion of this tap. So this is the basic Kriya. Apart from that, in our Shastra, it is said that if you do Posh Dashmi Aradhna for the whole 10 years and 10 months, then, and also once a year on every Posh Dasam, you have to listen to the Parshnath Bhagwan Jivan Charitra.
Okay, once a year on every Posh Dasam, you have to listen to the Parshanath Bhagwan Jivan Charitra from the Mukh of Guru Maharaj Sahib. So if you do this for a period of 10 years and 10 months, it is said that you will get Shanti, Samadhi Maran, and Sadgati, and ultimately Moksha in few bhavs. So this is the whole reason we are doing the Posh Dasmi Aradhna. So here in this session, we'll talk about the Parshanath Bhagwan Jivan Charitra. We have to do this once every year. So we will listen to the 10 bhavs of Parshanath Bhagwan. So you all know, you have the basic understanding of Parshanath Bhagwan ka Jivan. And then we will start with the Posh Dasmi Aradhna. So let's start with the Parshanath Bhagwan Jivan Charitra. So Parshanath Bhagwan Jivan Charitra is consists of 10 bhavs. Okay. So for all the Tirthankar Paramatma, the first bhav is when they achieve Samkit. Or when they achieve Samyak Darshan, it's considered their first bhav. So Parshanath Bhagwan achieved Samyak Darshan in the bhav of Marubhuti. And then after 10 bhav, then Parshanath Bhagwan achieved Moksha. So this is an amazing story of Parshanath Bhagwan that everyone should know. And we will start with the first bhav of Marubhuti. Okay, listen to this story carefully. I'm going to say this story in simple English language. And I've taken this story from our Granth called Tri Sashti Salaka Purush Charitra. Okay. So first bhav of Parshanath Bhagwan is Marubhuti. In the city of Potanpur in Jambudvip, it was ruled by King Arvind. In the same city, one religious Brahmin, Vishwabhuti, was residing with his wife Anuradha. They had two scholar sons. One was Kamat and one was Marubhuti. Though Kamat and Marubhuti were brothers, there were vast differences in their nature. Elder brother Kamat was angry, immoral, whereas Marubhuti was patient, well-mannered, and full of virtues. Both were married. Varuna was a wife of Kamat, and Vasundhara was a wife of Marubhuti. The parents handed over the responsibilities of the family to both the brothers when they passed away. Marubhuti was compassionate and was helping King Arvind with handling the family affairs and the affairs of state. Due to this, he frequently had to go out of town. Marubhuti's wife Vasundhara was very beautiful. Though Kamat was married, he was completely engrossed in Marubhuti's wife Vasundhara. One day when Marubhuti was out, Kamat forcibly abused Vasundhara. Varuna saw this and she told Marubhuti upon his return. This was unbelievable and shocking for Marubhuti that his brother would do such a thing. Marubhuti told the incident to King Arvind. How can a king tolerate this kind of stuff? King arrested Kamat and he punished Kamat by making him sit on the donkey and roam all over the city of Potanpur. Kamat became angry, thinking Marubhuti responsible for his humiliation. He complained to the king that Marubhuti complained to the king, and hence I had to bear such a shame. Thinking this, Kamat ran away into the forest and he became a Brahmin sadhu. Once he was meditating with a huge hatred in his heart for Marubhuti. Marubhuti was feeling down. He thought that he is responsible for his elder brother's insult and I should go and do the Shama Yajna. So Marubhuti came to the forest to say sorry to Kamat. He was about to go to Kamat, but Kamat threw a big stone on Marubhuti's head, and Marubhuti's head got smashed, and Marubhuti died immediately. King Arvind came to know this, and he realized the asartha of this sansar, and King Arvind took Diksha. Kamat ran away and ultimately died with Ardhyan in his heart and became snake called Kukut snake in his next bhav. Marubhuti also died with Ardhyan. He had Ardhyan in the last moment of his death and became elephant in the next bhav. Okay, so first bhav में Marubhuti और कामत थे, वही दूसरे bhav में पार्षनाथ भगवान का जीव जो मरुभूति था वो एलिफेंट बना है बिकॉज ऑफ अर्थ ध्यान, एंड जो कामत का जीव है वो क्रोध के कारण वो स्नेक बना है. ओके, सो दिस इज द सेकंड भाव. So Marubhuti, he became elephant in the next bhav and he became spouse of 500 female elephants. Here King Arvind, he took Diksha and became Arvind Muni. Arvind Muni once reached Samet Sikhar with a huge sang. The Atma of Marubhuti, who was now elephant, came to the foothills of Vindhyachal mountains. He saw huge crowd and became angry as he liked to remain lonely.
He became out of control and started throwing people in its trunk and also smashed many people under his feet. The angry elephant came directly in front of Arvind Muni. People became scared, thinking this angry elephant will hurt Arvind Muni. Looking at Arvind Muni, elephant stopped. Avdignani Arvind Muni said to the elephant, "Oh Marubhuti, in previous birth you accepted Sravak Dharma. In previous birth you went to apologize to your brother who was guilty of abusing your wife. And here, in this birth, you are killing innocent people. You died and became elephant due to Artha Dhyan. And you are still continuing with this Artha Dhyan." Listening to this elephant got Jatismarar Gyan. Muni explained the Shravak Dharma and an elephant accepted 11 vrats of Shravak. अभी तो तिर्यंज का जीव है ना, they cannot accept all the 12 vrats. They have to take 11 vrats क्योंकि last जो अतिथि संविभाग व्रत है, they cannot do it. So maximum तिर्यंज का जीव can follow 11 vrats. So here elephant takes the 11 vrat of Shravak. So elephant was living peacefully. Once he went to the lake for drinking water. Eve went ahead and his legs got trapped into the mud. It struggled to get out, but he went deeper into the mud. He realized that he won't be able to survive and his death is definite. He started Panch Parmesti Smaran. At the same time, Kukut snake, Kamat's Jeev, came over there and seeing the elephant, he got angry because of his previous bhavs, Vair Bhavna. Snake stinged the elephant repeatedly and the elephant died in acute pain in peacefully in Smaran of Panch Parmesti. Due to this Samadhi Maran, Maruputi's Jeev went to 8th Devlok called Sahastrar. Okay, तो पार्श्वनाथ भगवान का जीव पहले मरुभूति, फिर एलिफेंट को समाधि मरण होता है, and एलिफेंट का जीव it goes to 8th Devlok. Okay, here Kukut snake lived his life in Rautra Dhyan and went to 5th Narak. Okay, एक जीव ऊपर चढ़ रहा है और एक जीव कंटिन्यूअसली नीचे उतर रहा है. Jeev of Marubhuti lived 17 Sagaropam in the 8th Devlok and his name was Shashiprabh. He worshipped Tirthankar Paramatma in various ways and did various Dharma Aradhna and made his Samyak Darshan even more pure and Suddh. Jeev of Kamat also lived 17 Sagaropam in the 5th Narak in acute pain and torture. Okay, तो यहाँ पे 3 भाव फिनिश होते हैं. अभी 4th भाव पार्श्वनाथ भगवान का है किरण वेग मुनि. ओके, इन सुकच्च विदेह, ये महाविदेह क्षेत्र की बात है. In Sukach Videhe, there is a beautiful city called Tilak. It was ruled by Vidyadhar king called Vidyugati and had a queen called Kanak Tilak. After completing 17 Sagaropam of Avishya in the 8th Devlok, the Jeev of Marubhuti came to the womb of Queen Kanak Tilak. He was named as Kiran Veg. When Kiran Veg matured, his father handed over the responsibility of the kingdom and took Diksha. Kiran Veg married Vidyadhar princess called Padmavati, and they had a son called Kiran Tej. One day, a Suguru Mahatma came to the town and he took Diksha under Maharaj Sahib. So, Parshanath Bhagwan ka Jeev, wo Diksha leta hai. And he acquired Akash Gamini Vidya. By this Vidya, he went to Puskaravar Dweep and did Vandan to all the Saraswati Pratimas. And after that, he went to Vidyadhar mountain to do the meditation and dhyan. At the same time, the Jeev of Kamat, after completing the painful Ayushya of 17 Sagaropam in the 5th Narak, was again born as a snake. Abhi Ajgar, he was born as a python. Looking at Kiran Veg Muni, he recalled his previous bhav's enmity. So he swallowed Kiran Veg Muni completely. यहाँ पे वो पाइथन वापस पार्श्वनाथ भगवान को जीव को मार डालता है, तो वो पूरा swallow कर देता है पार्श्वनाथ भगवान को. After tolerating acute pain, Muni had Samadhi Maran and was born in the 12th Devlok. देखो पार्श्वनाथ भगवान का जीव every भाव में समाधि मरण आता है उनको, इतना पेन में वो समाधि रख सकते हैं. तो and he अभी उनका जीव और ऊपर बढ़ रहा है. He goes to 12th Devlok. The helpless snake died because of forest fire in the next bhav, and in the next bhav, the Jeev of Marubhuti was born in Jambum Vrat Viman in the 12th Devlok, and the Jeev of Kamat was born in the 6th Narak called Tamaprabha. Both were having Ayushya of 22 Sagaropams. One Jeev is climbing up the ladder
of success and going towards moksha, and another जीव is falling down because of वैर भाव. Okay, तो यहाँ पे 5 भाव फिनिश होते हैं, अभी 6th भाव. Okay, पार्श्वनाथ भगवान का 6th भाव है वज्रनाभ, किंग वज्रनाभ. In the 6th bhav, Jeev of Marubhuti, after completing 22 Sagropam Ayushya, came to the womb of Queen Lakshmivati, residing in the beautiful city of Subhankar in the eastern Videh. वापस महाविदेह क्षेत्र में जन्म होता है. Tirthankar Bahu and Subhahu both existed there. The Jeev of Marubhuti was named Vajranabh. Mature Vajranabh became a king of a huge empire. He acquired a foremost place in the heart of people by his good deeds. He handed over the responsibility of kingdom to his son and took Diksha under Avdigyani Shamankar Muni. Okay, वापस वो दीक्षा लेते हैं. One day, Vajranabh Muni was doing dhyan in the forest of Sukach, and suddenly one arrow pierced in his chest. After painful life in the 6th Narak, the Jeev of Kamat got birth in inferior Bhil tribe. अभी उसको मनुष्य का भाव मिलता है, पर वो inferior भाव भील जाति में. He was dark-bodied and was named as Kurangad. Kurangad was wandering in the forest for hunting, and he saw Vajranabh Muni, and due to Vair Bhav, he immediately released his arrow. His arrow pierced the delicate organs of the body. Peacefully, Muni endured the pain. He didn't have the slightest of Dvesh Bhav. He gave Shama to Kurangad and died a Samadhi Maran, and got birth in the 5th ग्रेवियक देवलोक. अभी 12 देवलोक के ऊपर 9 ग्रेवियक होते हैं और 9 ग्रेवियक के ऊपर 5 अनुत्तर होते हैं, तो और ऊपर बढ़ रहे हैं. सो पार्श्वनाथ भगवान का जीव वापस समाधि मरण होता है, एंड अभी वो 5th ग्रेवियक देवलोक में उत्पन्न होते हैं. Kurangad was very happy that he killed a monk and he went to 7th नरक. तो वो सबसे नीचे वाला नरक एक सबसे ऊपर वाला देवलोक की तरफ जाता है, और यहाँ पे वो 4th नरक नहीं 5th नरक 6th नरक, कभी वो 7th नरक में जाता है. So Jeev of Marubhuti was named as Dev Lalitang in the 5th Gravyak Devlok with the Ayushya of 27 Sagropams. Though he was surrounded by Bhog Samagri, he remained completely detached. On the other hand, the Jeev of Kamat went to 7th Narak with the Ayushya of same 27 Sagropams. तो यहाँ पे 7th भाव फिनिश होता है, अभी 8th भाव. ओके, पार्श्वनाथ भगवान और कामत का. So 8th भाव है किंग सुवर्ण बाहु. In the 8th bhav, the Jeev of Marubhuti came to the womb of Queen Sudarshana, wife of King Sushil Bahu, at Puranpur city in the eastern Videh. वापस महाविदेह क्षेत्र की बात है. The mother saw 14 great dreams, indicating the birth of Chakravarti. He was named Suvarna Bahu and married Princess Padmavati, the daughter of Ratnapur city's King Khechar. The Chakra Ratna was developed in the armory and he conquered all the 6 continents. One day, Tirthankar Jagannath came to the city of Puranpur. He came to know the asartha of the sansar, listening to the Dikshna, and took the Diksha. अभी वापस चक्रवर्ती भव में वापस वो दीक्षा लेता है. देखो, पार्श्वनाथ भगवान का जीव सब कुछ भोग सामग्री छोड़ के एवरी भव में वो दीक्षा लेता है, राइट? He did Vistanak Tap, Aradhna in the best manner and acquired Tirthankar Nam Karma. Once he was doing dhyan in Shinvarna forest. At the same time, the Jeev of Kamat was born as a lion after completing 27 Sagrapam Ayushya in the 7th Narak. He saw the Muni in Kausarg. Due to the previous bhavs where bhav, he leaped on the Muni and killed the Muni. Muni died Samadhi Maran and went to the 10th Devlok. अभी वो वापस पार्श्वनाथ भगवान का जीव 10th देवलोक में जाते हैं. In the 9th bhav, the Jeev of Marubhuti became Mahardik Dev in Mahaprabh Viman of the 10th Devlok called Pranath with the Ayushya of 20 Sagropams. In this bhav, he celebrated the 500 Kalyanaks of Tirthankar Paramatma. अभी पार्श्वनाथ भगवान का जीव है ना, वो एक ओनली ऐसा जीव है जिसने 500 तीर्थंकर के कल्याणक सेलिब्रेट किए देवलोक में. ओके, तो उत्तम उन्होंने यहाँ पे जो उनका जो यश नाम कर्म है, भगवान पार्श्वनाथ भगवान का सबसे ज्यादा यश नाम कर्म है, राइट? वो इसके कारण क्योंकि उन्होंने 500 बार तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक उन्होंने सेलिब्रेट किया. On the other hand, Jeev of Kamat was bearing Duk in the 4th Narak with the same Ayushya. After the birth of Kamat,
He went 4 times to Narak. 2 times he became snake. One time as lion, and one time as human. At that too of an inferior Bhil tribe. On the other hand, the Jeev of Marubhuti went to Devlok 4 times. He became Chakravarti once. He was born as an elephant once, and he also suffered a pain at the hands of Kamath. In the birth of any Tirthankar Paramatma, this has happened for the first time that one particular Jew was responsible for the death for 5 different occasions of तीर्थंकर परमात्मा. ये पहली बार ऐसा होता है पूरे अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल में कि एक तीर्थंकर परमात्मा का एक जीव ने 5 बार 5 भव में मारा होगा. This happens for the first time. इतना भैरव भाव. तो अभी लास्ट भव है पार्श्वनाथ भगवान का. ओके, 10th भव की बात करते हैं. In the Kashi Desh of Bharat Kshetra, in this Varanasi city, King Aswashen was ruling. He had Queen Vama Devi. Their lineage was Ishwakukul. After completing the life in 10th Devlok, the Jeev of Marubhuti came to the womb of Queen Vama Devi. On the 4th day of Falgun, Queen dreamed 14 great dreams. After 9 months and 7.5 days, Vama Devi delivers a green-colored baby boy with a snake as a चिन्ह on Posh Dasam. तो आज के दिन पार्श्वनाथ भगवान का जन्म होता है. तो that's why we are doing this जीवन चरित्र. 56 Dik Kumaris and 64 Indras celebrated the memorable birth ceremony. King Ashwashan decorated the whole Varanasi Nagari like Devlok. When Bhagwan was in Mata's Garbh, Queen Vama Devi saw a snake passing by, and that's why Bhagwan was named as Parshva. Parshva matlab snake. Okay. Having height of 9 hands, Parshva Kumar became adult. He was bright green color like sapphire. Parshva Kumar saw his Bhogavali karma remaining, and with his parents' request married Prabhavati. Once Parshva Kumar was sitting in the gallery watching the town. He was surprised when he saw people of the town going in the same direction with various puja samagri in the hands. He inquired and came to know that Kamath, who was born as a poor Brahmin, was doing various tap. अभी कामत का जीव वो मनुष्य मिलता है और वो ब्राह्मण बनता है और वो काफी तपस्या कर रहा है. All were going to worship of the Kamath who was doing पंचाग्नि तप. वही पंचाग्नि तप ऐसा होता है कि अग्नि प्रकटाते हैं और उसके गर्मी में वो लोग कौसर्ग और वो ध्यान करते हैं. तो वो काफी मुश्किल तप है. तो कामत का जीव अभी वो ब्राह्मण बना है और वो पंचाग्नि तप कर रहा है. Parshva Kumar also came with his family to get a glimpse of Kamath. Avdignani Bhagwan saw a snake couple burning in the fire of Panchangni Tap. Instantly he said to Kamath, compassion is a mother of all religion. The snakes are burning in the fire. Till now, Kamath only met people who appreciated him. How can he bear the truth? Kamath replied, hey prince, you ride elephants, you ride horses, you fight wars, play and enjoy. What do you know about the religion? Parshva Kumar immediately ordered the soldiers and took the burning wood and carefully shattered the wood, and 2 big snakes came out. Parshva Kumar recited Naukar mantra and the snake died Samadhi Maran, and in the next birth they are born as Dharmendra Dev. Okay, अब snake का जीव धर्मेंद्र भुवनपति के देव में उत्पन्न होता है. All started singing glory of Parshva Kumar. Kamath went elsewhere. He did various types of taps, and ultimately he died and he becomes Dev, as known as Meghmali Dev in Bhuvanpati Devlok. भाई कामत का जीव वो अभी भुवनपति देवलोक में उत्पन्न होता है. One day Parshva Kumar went to the art gallery and he saw a picture of Nami Kumar's marriage, and a picture of Nami Kumar returning, basically renouncing, his wife, वापस आते हैं. So he knew it was his time for his diksha. Lokantik Devs came and requested Bhagwan to give Varshidan. After giving Varshidan for a year, Bhagwan sitting in Vishala Palki came to Ashram Pad Udyan with thousands of devs and people. On Maksar Vad Agyaras, Kal ke din, okay, Maksar Vad Agyaras, Bhagwan, now 30 years old, took Diksha with 300 kings. And immediately after taking Diksha, Bhagwan ko Manapura Gyan utpan hota hai. On next day, he broke the Attam Tup with Kheer at the place of Dhanya at Kaptak Nagari. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि
हम लोग पोष दशमी क्यों सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग 3 एकादशना क्यों करते हैं? तो इफ यू सी द कोई भी तीर्थंकर चरित्र, ऑल द 24, जब कोई भी भगवान ने दीक्षा लिया है, उन्होंने जो पारणा किया है, आइदर वो शुगर वाटर से किया है, मतलब शुगर कैन के जूस से किया है, या फिर वो खीर से पारणा किया है। तो हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं, दैट्स व्हाई वी डू 3 एकादशनास। हम लोग भगवान का जो दीक्षा का जो 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 पारणा है, भगवान जनरली अट्ठम तप करते हैं या छठ करते हैं दीक्षा के वक्त, और अभी भी वो प्रथा चालू है। जो भी जीव दीक्षा लेता है, अभी वो दीक्षा के वक्त वो छठ करता है या अट्ठम करता है, और पारणा में आइदर वो खीर लेता है और या शुगर वाटर लेता है। तो अभी भी हम वो फॉलो करते हैं। बट दिस इज द होल रीजन वी आर डूइंग द पोस्ट दशमी आराधना एंड वी आर डूइंग 3 एकादशना। इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ जन्म एंड दीक्षा कल्याणक। एक एक क्वेश्चन टू एवरीवन। अभी जो पोष दशमी है, इट कम्स इन द मंथ ऑफ मार्गशीर, राइट? मार्गशीर, नौम, दसम, 11, तो उसको पोष क्यों बोलते हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड पोष? मीना मैन को पता है, पर और किसी के पास आंसर है? व्हाई डू वी कॉल पोष दशमी इवन दो इट्स इन मंथ ऑफ मार्गशीर? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो पहले क्या होता था, और अभी भी मारवाड़ी में वो प्रथा है। पहले क्या होता था कि न्यू मंथ वो वध एकम को स्टार्ट होता था। अभी न्यू मंथ शुद्ध एकम को स्टार्ट होता है, वो ओके है, वो महाराज साहब ने चेंज किया। पर पहले वध एकम को न्यू मंथ स्टार्ट होता था, और तो 14 डेज का गैप आ गया। तो पार्श्वनाथ भगवान को जो जन्म था वो पोष महीने में था, अभी वो सेम वो मार्गशीर में आ गया। तो दैट इज द ओनली रीजन वी आर सेलिब्रेटिंग इन द मंथ ऑफ मार्गशीर। पर वी स्टिल कॉल इट द सेम, अभी भी हम पोष बोलते हैं, क्योंकि वो वो प्रथा है अपनी, वो अपनी परंपरा है। तो इसलिए हम उसको पोष दशमी बोलते हैं। ओके। तो यहाँ पे फिर मेघमाली देव केम देयर एंड डिड घोर उपसर्ग ऑन भगवान. He released various types of animals, dangerous lions, snakes, but Bhagwan remained engrossed in dhyan. At last, he started with the heavy rainfall and heavy and hazardous lightnings. Dams and rivers were overflowing. The water started increasing very fast and reached Bhagwan's chest. At the same time, the thrones of Dhanendra Dev trembled. Using Avdhi he came to know the upsarg of Meghmali Dev. He created lotus under the feet of Bhagwan and lifted the Bhagwan and created a chhatra with his 7 fanas on Bhagwan. Dhanendra Dev says to Meghmali, "You have tortured Bhagwan in many bhavs, and because of this you have suffered pains in Narak. Just think, Bhagwan will not sink in your rain, but you yourself will sink in the ocean of Sansar." Finally, Meghmali realized, and he apologized and returned to his place. Dhanendra also did Vandan to the Bhagwan and returned to his own place. Bhagwan had same feeling towards Meghmali and Dhanendra, and he did not have hatred towards Meghmali and did not have attachment towards Dhanendra. इसलिए हम बोलते हैं, कमटे धनेन्द्र च सोचितम कर्म कुर्वती प्रभु स्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रेष्ठ। भगवान को सेम मनोवृत्ति है मेघमाली की तरफ और धनेन्द्र की तरफ, राइट? हमको जीवन में वही सेम मनोवृत्ति रखना है। कोई अपने पे द्वेष करे, अपना बुरा बोले, उसके तरफ भी प्रेम भाव, और जो अपना करे उसके तरफ भी कोई अटैचमेंट नहीं। तो वो पार्श्वनाथ भगवान से सीखना है। आफ्टर वॉन्डरिंग फॉर 84 days एज छद्मस्त, भगवान अगेन केम टू वाराणसी. In Ashrampad Udyan, he was meditating below Ghatki Vruksh. He had Attham Thap. In Vaishak Nakshatra, 14th day of Chaitra Vad Chaudas, Bhagwan attained Keval Gnan. Devtas created Samosaran. Bhagwan gave Deshna under 77 Dhanushya tall Chaitya Vruksh, and many took Diksha and many took Shravak Vrat. Arya Dutt and 9 others became Gandhars. King Ashwashan, Mother Vama Devi, Queen Prabhavati also took Diksha. Parshva became Yaksh and Padmavati became Yakshini of the Bhagwan, always staying with the Bhagwan. Bhagwan passed 30 years in Grihastha, 70 years as Sadhu, and after completing the Ayushya of 100 years, with 33 other Muni reached Samet Sikar. He did Anshan for a month and went to Moksha with, on the 8th day of Shravan. The time period of 83,750 years had passed between the Nirvana of Naminath Bhagwan and Parshanath Bhagwan. Right? तो इतना टाइम पीरियड जाता है. अगर कोई पूछे हमको, राइट, दिस जस्ट फॉर नॉलेज, कि महाभारत कब हुआ था, इट वॉज 84,000 ईयर्स बैक. सब लोग 4,000 5,000 साल बोलते हैं, पर कल्पसूत्र के हिसाब से नैमिनाथ भगवान
he was 83,750 years back. Okay, so अपने हिसाब से महाभारत was 84,000 years back. कोई पूछे रामायण कब हुआ था? ओके, तो नेमिनाथ भगवान 84,000 years back थे. उसके पहले नमीनाथ भगवान 5 लाख साल पहले थे. ओके, उसके पहले मुनि सूरत स्वामी 11 लाख साल पहले थे. तो मुनि सूरत स्वामी के समय ये रामायण हुआ था. तो रामायण जैन धर्म के हिसाब से इट वाज 11 लाख ईयर्स पहले. सो दैट इज अ ट्रूथ. ये लोग कुछ 10,000 साल बोलते हैं, वो सब बराबर नहीं है. रामायण वाज 11 लाख ईयर्स और महाभारत वाज 84,000 ईयर्स पहले. ओके, जस्ट फॉर नॉलेज. तो यहाँ पे हम जीवन चरित्र फिनिश करते हैं और हम आराधना शुरू करते हैं. तो हमने 12 साथिया तो कर दी है. जो भी घर पे आप भी 12 साथिया कर सकते हो. और हम अभी सबसे पहले 12 प्रदक्षिणा देते हैं. यहाँ पे भगवान है तो भगवान की 12 प्रदक्षिणा देते हैं और 12 खमाशना देते हैं. मीना बहन. सकल समेहित पूर्वा कल्प वृक्ष अवतार पार्श्व प्रभु प्रसन्न सदा संखेश्वर सुखकार ओम ह्रीं श्रीं अशोक वृक्ष प्रातिहार्य युक्ताय धनेन्द्र पद्मावती पूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः. इच्छामि खमा समणो वंदे उजावणी जाय निश्चयाय मथेन वंदामि. सकल मनोरथ पूरवा मंगल केली निवास वामानंदन वंदिये श्री संखेश्वर पास. ओम ग्रीं श्री शूर पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य युक्ताय धनेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री संखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः. इच्छामि खमा समणो वंदे उजावणी जाय निश्चयाय मथेन वंदामि. प्रणमो प्रेमे पासजीन श्री संखेश्वर देव सुर नरवर किन्नर सदा जेहनी सारे सेव. सकल गुण कर पासजी शंखेश्वर अभिराम मन वांछित सुख संपजे नित समरंता नाम. ओम ग्रीं श्री दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य युक्ताय धनेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः. इच्छामि खमा समणो वंदे उजावणी जाय निश्चयाय मथेन वंदामि. नंबर 4. सकल सुहंकर पासजी शंखेश्वर सिरदार शंखेश्वर केशव जरा हरत करत उपकार श्री शंखेश्वर साहिबो सुरतरु सम अवतार पुरुषादाणी पासजी खट दर्शन विख्यात. ओम ग्रीं श्रीं चामर युगल प्रातिहार्य युक्ताय धनेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः. इच्छामि खमा समणो वंदे उजावणी जाय निश्चयाय मथेन वंदामि. सकल सिद्धिदायक सदा शंखेश्वर प्रभु पास प्रणमो पद कज प्रेम थी आणी मन उल्लास. सकल कुशल कमलावली भासक भाण समान श्री शंखेश्वर पासना चरण नमो धरि ध्यान. ओम ग्रीं श्री सिंहासन प्रातिहार्य युक्ताय धनेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः. इच्छामि खमा समणो वंदे उजावणी निश्चयाय मथेन वंदामि. श्री शंखेश्वर पास जी हरि जरा हरनार
तस प्रणमु प्रेमे करी शिवरमणी उरहार श्री संखेश्वर पासजी प्रणमु एहन पाय अश्वसेन राजा कुळे जन्म्या श्री जिनराय ओम ग्रीम श्री भामंडळ प्रातिहार्य युक्ताय श्री धनेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः इच्छामि खमा समणो वंदे उजावणी जय निस्याय मथेण दुरित टळे वांछित फळे जो नाम समरंत श्री संखेश्वर पासजीन ते प्रणमु एकांत श्री संखेश्वर धणी प्रणमी पासजीनंद नाम जपंता जेहनु आपे परमानंद ओम ग्रीम श्री देव दुंदुभी प्रातिहार्य युक्ताय श्री धनेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री संखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः इच्छामि खमा समणो वंदे जय निस्याय श्री संखेश्वर पार्श्वजीन प्रणम पद अरविंद अश्वसेन नृप कुलतिलो आमा देवी नंद इंद्र चंद्र नागेंद्र नर सेव सारे सार पार्श्व संखेश्वर प्रणमता सफल हुए अवतार ओम ग्रीम श्री छत्रत्रय प्रातिहार्य युक्ताय श्री संखेश्वर पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम धनेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः इच्छामि खमा समणो वंदे उजावणी जय निस्याय मथेण वंदन બધા મોટેથી બોલી શકે છે ઈચ્છામી ખમાસનો આવે ત્યારે શ્રી શંખેશ્વર સુખ કરું નમતા નવે નિધાન વિઘ્ન વિદારણ વીરવાર વાસુધા વાદ્યવાન श्री संखेश्वर पासजी प्रणत पुरंदर देव अलिय विघन दूर करे करे जा ससुर से ओम ग्रीम श्री ज्ञानातिशय युक्ताय श्री धनेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः श्री संखेश्वर पासजी मोटो महिमा जास चिंतामणि चिंता हरि आपे लील विलास ओम ग्रीम श्री वचनातिशय युक्ताय श्री धनेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री संखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः सकल समीहित सुरलता सिंचन नव जलधार श्री संखेश्वर पासजी प्रणमु प्राण आधार ओम ग्रीम श्री पूजातिशय युक्ताय श्री धनेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री संखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः इच्छामि હવે લાસ્ટ છે જેને પણ બધાને ઊભા થઈને કરવો છે સકળ મનોરથ પૂરવે શ્રી સંખેશ્વર પાસ પરતા પૂરણ પ્રણમીએ લહીએ લીલ વિલાસ અશ્વસેન કુલ ધ્વજ સમો વામા કેરો નંદ श्री संखेश्वर प्रणमता होवे नित आनंद ओम ग्रीम श्री अपाया पद्मातिशय युक्ताय श्री धनेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री संखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः इच्छामि खमा समणो वंदे उजा मथेण वंदन चैतवंदन
ના આપણે 12 લોકેશનનો કૌશક કરી લઈએ પછી ચૈત્યનું કરીશું. इच्छामि खमासमनो वंदे ओम जावणी जाय निशियाय मतेर वंदामि इच्छा कारण संदेश भगवान श्री पार्श्वनाथ स्वामी आराधनार्थे कौशक करू इच्छम श्री पार्श्वनाथ स्वामी आराधनार्थे कर्मी कौशकम वंदनवती पूर्णवती सकारवती समानवती बोहिलाभवती निरुगस्कवती सद्यामि देह दानाय अनुपय वटमय टामि कौशकम अन्नत उससिरम निससिम खाश्रम शम जंभायरम उदरवाणी सगम बमले पितम चाय सुमि मंगल सम चालेम सुमिम खेल सम चालेम सुमि रीतिनम चालेम એમે માગણી અભોગો એ રાજ્ય મેં કૌશક ગો 12 લોગસ ચંદેસુ નિમલારાય સુધી ના આવડે તો 48 નો કાર્સ જાવળિયંતાણમ ભગવંતાણમ નમુક્કાણ ન પણ વિઠા ખાયમ ટાણેનમ મોણેનમ જાણેનમ અપ્પાનમ વોસિરામી.
नमो नित्रम लोकस्य उद्योगरे दम्मति तयरे जिने हरियन्ति कीर्ते संशविसंपि केवली उसमजयम चवन्दे संभवममिनं धनं समयञ्च पौमपुसासं जिरञ्चितनं पं वन्दे सुविञ्च फुवनन्तं शीलसिजं च वासुपूज्यं च विमलमनं तन्तिरं धम्मसन्धिं च वन्दामि कुन्तुमनं च वल्लीं वन्दे मुनिसुन्यामिजनं च वन्दामि रिट्टनेमि पासं तद्मनं च एवमय अभिट्वा व्यूयरमनापैनजनमना चविसंपि जिनमना तित्तेरां पश्यन्तु कित्यवनियमया जे लोकस्मा से दारुगबोइलापं समायवनमुतं निन्तु चन्देस्तु निमलयरायचे स्वयं पयसरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मुमनि संतु इच्छामि कमा समरो वंदे ओम जामनी जाय निसी आय मथे वंदामी હવે આપણે ચૈત્ય વંદન કરીશું. મીનાબેન બોલાવજો ચૈત્ય. इच्छामि कमा समणो वंदे उजावणी जाय निस्याय मथेण वंदामि. इच्छा कारण संदेश भगवान इरवियम पडिकमामि इच्छामि इच्छामि पडिकमि वीर्यवियाय वीरानाय गमनमने पाणकमने बियकमने हरियकमने उषा उतिंग पण गदग मट्टी मकड़ा संताना संकमने जेमे जीवा विराहिया ए गेंदिया बेंदिया तेंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहयावतिया लेसिया संगया संगट्टिया परियाविया किल्लमिया उद्धविया ठाणा उठाणम संकामिया जीव्या वव्रव्या तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्सौत्री कर्णेनं पायचित कर्णेनं विसोहि कर्णेनं विस्सल्लि कर्णेनं पावाणं कम्माणं निघायणं ठाये ठामि कौसगम अनत्थ उस्सस्येणं निस्सस्येणं खास्येणं छियेणं जम्भयेणं उड्डोयणं वाय निसगणं भमलिये पित्तमुचाये सुहु में ही अंग संचाले ही सुहु में ही खेल संचाले सुहु में ही दिठी संचाले ही एव मैं यही मागारे मब्ब गोविरयो उजमे कौसो गो जाओ अरिहंतान भगवंतान नमकाना परिमित ताव कायम ठाणे नम मोने नम जाणे नम एक लोगस नो कौसग न फावे तो 4 नवकार ताव कायम ठाणे नम मोने नम जाणे नम अप्पान मोसिरा नमोरेन्ताणं लोगस्य उज्जो अगरे दम्मतिथयरे जिने अरिहन्ते कित्ते संचौवि संपि केवले उसभम अजियच वन्दे संभम अभिनन्दनं च सुमैञ्चं पौमपहं सुपासं जिणञ्च चन्दपह वन्दे सुविहिञ्च पुफ्फदन्तं शिलसिचं वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिणन्दं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुम् अरञ्च मल्लि वन्दे मुनिस्वयं नमि जिणं च वन्दामि रिठनेमि पासन्त वद्धमाणञ्चम् एवं मय भित्वा विहूयर्यमला पहिण जर्मणा 24 संपि जिणवर तिथे रामे पश्यन्तु कित्तीय वन्दीय मह्या जे ए लोग सौतमा सिद्धा आरोग बहुलाभम समयवर्मुतमं दिन्तुं छन्दे सुनिमलैरा आयचे सोन्यं पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तुं इच्छामि खमा समणो वन्दे उजावणी जाय निस्याय मथेण वन्दामि इच्छामि खमा समणो वन्दे उजावणी जाय निस्याय मथेण वन्दामि इच्छामि खमा समणो वन्दे उजावणी जाय निस्याय मथेण वन्दामि. इच्छा कारण संदेश भगवान चैत्य वंदन करो इच्छम. सकल कुशलवल्ली पुष्करावर्त में गो दुरित तिमिर भानु कल्प वृक्षोपमान भवजल निधि पोत सर्व संपत्ति है तू सबवतु सततम वह श्रेय शांतिनाथाय श्रेयसे पार्श्वनाथाय आस प्रभुपासि तोड़े बहुपास वामा माता जन्मिया हैलंचन जास अश्वसेन सुत सुख खरु नवहात निकाया काशी देश वराणसी पुण्य प्रभु आया 100 वर्ष नु आवखु वे पाड़ी पार्श कुमार पद्म गए मुक्ते गया नमता सुख निर्धार जंकिंची नाम तित्तम सगे पाली मानुसलोय जायनि मैम टाइम समवाई वंदामि नमोत्थुणम अरिहंताणं भगवंताणं ऐक्यराणं तिथैराणं सैंसबुद्धाणं पुरीसुत्तमाणं पुरीसस्याणं पुरीसवरपुण्डर्याणं पुरीसवरगन्धार्थीणं लोगोत्तमाणं लोकनाहाणं लोकहियाणं लोकपैवाणं लोकपज्जो अग्राणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायकाणं धम्मसारहिणं धम्मवरचौरन्त चक्रवटेणं अपरिहैवर्णाणं दंसनधराणं वियट्टछौमाणं
જીનાનમ જાવયાણમ તિન્નાનમ તારયાણમ બુદ્ધાણમ બોયાણમ ઉત્તરમોગણમ સૌવનુણમ સૌવદરિષીણમ શિવ મયલમ અરુવમ અનંતમ અક્ષયમ બાહમ પુનરાવૃત્તિ સિદ્ધિ ગઈ નામ ધે ઠાણમ સંપત્તાણમ નમો જીણાણમ જય અભયાણમ જય સિદ્ધા જય ભવિસંતિણા ગઈકાલે સંપય્ય વટ્ટમાણા સવેતિ વિણવંદામી જાવંતી ચેયાઈમ ઉડ્ડેય અહયતિર્યલોય સંવૈંતય વંદે ઇય સંતો તથ સંતાઈમ ઈચ્છામિ ખમા સમ વંદે ઉજાવણી જાય નિશ્ચય મધ્યેણ વંદન જાવંત કેવી સાહુ ભરય રવય માવી દેહેય સંવૈ સિંતેસી પણ હો તિવેણતિ દંડ વિર્યાણમ. નમો રસ સિદ્ધાચાર્ય ઉપાધ્યાય સર્વ સાધુભ્ય. પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું સ્તવન લેશું આપણે. તું પ્રભુ મારો હું પ્રભુ તારો ક્ષણ એક મુજને નાહી વિસારો મહેર કરી મુજ વિનંતી સ્વીકારો સ્વામી સેવક જાણી નિહાળો તું પ્રભુ મારો હું પ્રભુ તારો ક્ષણ એક મુજને નાહી વિસા લાખ 84 ભટકી પ્રભુજી આવ્યો હું તારે શરણે હો જીનજી દુર્ગતિ કાપો શિવ સુખ આપો ભક્ત સેવકને નિજ પદ સ્થાપો તું પ્રભુ મારો હું પ્રભુ તારો ક્ષણ એક મુજને નાહી વિસારો અક્ષય ખજાનો પ્રભુ તારો ભર્યો છે આપ કૃપાળુ મેં હાથ ધર્યો છે વામાનંદન જગ વંદન પ્યારો દેવ અને રામા હે તું છે ન્યારો તું પ્રભુ મારો હું પ્રભુ તારો ક્ષણ એક મુજને નાહી વિસારો પલ પલ સમરો નાથ સંખેશ્વર સમરથ તારણ તું હિ જિનેશ્વર પ્રાણ થકી તું અધિકો વહાલો પ્રાણ થકી તું અધિકો વહાલો દયા કરી મુજને નયણે નિહાળો તું પ્રભુ મારો એક મુજને નાહી વિસારો ભક્ત વત્સલ તારો બિરુદ જાણી કેડ ન છોડું એમ લેજો જાણી ચરણોની સેવા નિત નિત ચાહું ઘડી ઘડી મન માહે હું ઉમા હું તું પ્રભુ મારો હું પ્રભુ તારો ક્ષણ એક મુજને નાહી વિસારો જ્ઞાન વિમલ તુજ ભક્તિ પ્રભાવે ભવો ભવના સંતાપ મિટાવે અમિયા ભરેલી તારી મૂર્તિ નિહાળી પાપ અંતરના દેજો પખાળી તું પ્રભુ મારો હું પ્રભુ તારો ક્ષણ એક મુજને નાહી વિસા
सगरं पासं पासं वन्दामि कमगर्मुखं विसर्विसनिन्दासं मङ्गलकल्याणावासं विसर फुल्लिङ्गमन्तं कण्ठे जोसमनुमतस्य गह रोगमारि टुटुरन्ति हो समं चित्तौ दुरेमन्तो तुच्य परमविव फलो नरतिरे सुविजापान्ति न दुःख दोगच्चम तु सम्मत्य लद्दे चिन्तामणि कपपाय भये पावन्ति विज्ञरं जीवाय ब्रह्मठाणं ये सन्तो महायस बतिबर निबरेण येन तादेव दिज्जभूमिं भवे भवे पास जनचंद जय विराय जगगुरु होम हम तोपाओ भवम भव निवेव मगाण साइट प्रसिद्धि लोग विरुद्ध चाओ गुरु जन पुआ परत करणम च सुहो गुरु योग तमय सेवा मम कंडावारी जय जय वी निया मंदिरम विराय तुह समय थई मं उज्ज सेवा भवे भवे तुम चलनम दुख को कम को समाय मनम च बोइला प संपजो मायम तुनाम तुह नाम परमण करणम सर्व मंगल मांगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयति शासनम हरियंची राम कर्मिका सकम वनरते पुण्यते सकारवते समानवते बोइला भवत्याय निर्कुशकते सत्य मे ध्येय दान अनुरूपे वजन टामी कसकम अन्नत उचसिरम निससिरम काश्रम चम जंभायरम उडोर वाणिसकम ममले पितम चाय सुमि मंगसम चालेम सुमिम खेल सम चालेम सुमिम दिथिरम चालेम एवं आंगणे अबको इराय जमे कौसगो एक नौका नो कौसक थोय सामने पारजो जावरी अंतरम भगवंत तारम नमो काय नो पेटा कायम ताने मणिरम अपानम वोसिरामी नमोरिंदरम नमो सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्य पार्श्वजिनंदा वामानंदा जब गर्भे फरी सुपना देके अर्थ विशेषे कहे मद वामनी जिनवर जाया सुरहुल राया हुआ रमणी प्रिय नैमी राजी चित्त विराजी विलोकित व्रत लिए इच्छामी खमा समरो वंदे ओम जामणी जाय निसी आय मते वंदामी। तो आपरे हजू थोड़ो टाइम है पण मेन तो आज तमे एक सामयिक करीने पॉसिबल हो तो 20 माना गणवानी है और जो 20 शक्य ना हो तो एटलीस्ट 5 माना तो गणजो ओम ह्रीम अनम श्री ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथा हरते नमः के ओम ह्रीम अनम श्री पार्श्वनाथाय नमः के ओम ह्रीम श्री धर्मेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री संकेश्वर पार्श्वनाथाय नमः कोई पण मंत्र आ 3 माथी यू कैन डू 20 मालास અને ના હોય તો 5 માલાસ અને એટલીસ્ટ આજે રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ કરશો જ। આજે 5 ને 20 આવે છે તો કશું તપ ના થાય તો રાત્રિ ભોજન તો અવશ્ય કરજો। અને નાવ આપણે 108 પાર્શ્વનાથ ભગવાનના નામ સ્મરણ કરીશું। અહીંયા મીનાબેન 108 पार्श्व भगवान नाम ओम ग्रीम श्रीम संखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ओम ग्रीम श्रीम संखेश्वर पार्श्वनाथ ओम ग्रीम श्रीम जिरावला पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम केसरिया पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम स्तंभन पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम मनमोहन पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम ज्योतिंगड़ा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम संखला पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम गंभीरा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम गाडलिया पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम कलिकुंड पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम शामळा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम मुलेवा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम रिंकार पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री सुख सागर पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री मोहरी पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री पोशिना पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री विघ्न पहार पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री फुल्लिंग पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री नागफणा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री कल्याण पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री मनोरंजन पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री सुल्तान पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री सुल्तान पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री डोसला पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री पल्लविया पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री भिल्लडिया पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री पंचासरा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री कोका पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री कंकण पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री घिया पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री धनेन्द्र पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री पद्मावती पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री धिंगड़मल पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री वाड़ी पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री दूधाधारी पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री टांकला पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री भीड़ भंजन पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री वणछरा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री कंसारी पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री सोम चिंतामणि पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम सावरा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम वाराणसी पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम प्रगट प्रभावी पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम लोढ़न पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम अम्मी जरा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम कल्हारा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम चंपा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम सूरज मंडन पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम सहस्त्र फणा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम नवसारी पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम दोकड़िया पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम चोरवाड़ी पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम नव पल्लव पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम अमृत जरा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम बरेजा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम सप्तफणा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम भाभा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री भद्रेश्वर पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री द्रुत कल्लोल पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम भयभंजन पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम लोद्रवा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम संकट हरण पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम कुंकुम रोल पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम आशा पूरण पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम सिरोडिया पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम हमीरपुरा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम पोसली पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम कच्छुलिका पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम दादा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम सेसले पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री राणकपुरा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम सोगठिया पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम वरकणा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम नवलखा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम स्वयंभू पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम
फल वर्धी पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री विजय चिंतामणि पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री मंडो वरा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री करेड़ पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री वही पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री नवखंडा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री नागेश्वरा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री अजाहरा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री सेरिसा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री समेत शिखर पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री भटेवा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री उवस गहरम पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री अलौकिक पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री कल्पद्रुम पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री कुकड़ेश्वर पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री भुवन पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री रावण पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री कामित पुराण पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री अवंती पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री समीना पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री चंदा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री मक्षी पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री जगवल्लभ पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री गिरिव पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री मनोवांछित पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री विमल पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री विघ्नहरा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री महादेवा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम आनंद पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम चारुप पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम गौड़ीजी पार्श्वनाथाय नमः। थैंक यू। આપણે ઓનલાઈન સુરેખાબેન ને પાર્શ્વનાથ ભગવાનનો છંદ ગાવો છે. સુરેખાબેન આપ ગવડાવજો છંદ. 2 મિનિટ. હા, સુરેખાબેન છે? હું ચાલુ કર. હા, બોલાવજો. સંભળાય છે? હા, સંભળાય છે. હા, ઓકે. આ પાર્શ્વનાથ ભગવાનના ભોજનનો તમારો મ્યુટ થઈ ગયો. અનમ્યુટ કરો તમે. સુરેખાબેન, તમારો મ્યુટ છે. સુરેખાબેન, હા તમારો, હા બોલાવજો. હવે સંભળાય છે? હા, સંભળાય છે. તો આમાં આપણે મહારાજ સાહેબ શ્રી મહારાજ સાહેબ શ્રી ગુમાન વિજય ના શિષ્ય સૌભાગ્ય વિજયે આ ભોજનનો થાળ બનાવ્યો છે અને એ આપણે શાંતિથી સાંભળીએ. સંભળાયું હવે બરાબર? હા, બોલો. બોલાવો બોલાવો. હા, ચૈતનભાઈ સંભળાય છે? જો અહીંયા સંભળાય છે, તમે પ્રકાશો. માતા મામા દે બોલાવે જમવા પાશ્વને રે, જમવા વેળા થઈ છે રમવાને ચિત્ત જાય ચાલો, તાત તુમારા બહુ થાય ઉતાવળા રે, વેલા હાલો ને ભોજન યાતારા થાય, માતા મામા દે બોલાવે જમવા પાશ્વને રે. માતાનું વચન સુનીને જમવાનું બહુ પ્રેમ શું રે, બુદ્ધિ બાજ ચઢાડી બેઠા થઈ હોશિયાર વિનય થાલ ઉજારી લાલન આગળ મૂક્યો રે, વિવેક વાટકીયો શોભાવે થાર મુજાર, માતા મામા દે બોલાવે જમવા પાશ્વને રે, સમકિત શેલડીના છોલીને ગઠ્ઠા મૂક્યા રે, દાનના દાડમ દાણા ફોલી આપ્યા ખાસ, સમતા સીતાફળનો રસ પીજો બહુ રાજ્યા રે, ભક્તિ જામળ પ્યારા આરોગો ને પાસ, માતા મામા દે બોલાવે જમવા પાશ્વને રે, મારા નાનડિયાને ચોખ્ખા ચિત્તના ચૂર મારે,
સુમતી સાકર ઉપર ભાવ શુંભેલું ધ્રુત ભક્તિ ભજિયા પીરસ્યા પાર્શ્વ કુમાર ને પ્રેમ શું રે અનુભવ અથાણા ચાખો ને રાખો શરત માતા વામાદે બોલાવે જમવા પાર્શ્વને રે પ્રભુને ગુણ ગુંદાને જ્ઞાન ગુંદવડા પીરશ્યામ જો માનવ ધારણ કાજ જાણપણાની જલેબી જમતા ભાગે ભૂખડી રે દયા દૂધ પાક મીરસ આરોગો ને આજ માતા વામાદી બોલાવે જમવા પાર્શ્વને રે સંતોષ શીરો ને વળી પુણ્યની પૂરી પીરસી રે સંવેગ શાક ભલા છે દાતર ઢીલી દાળ મોટાઈ માલ પુઆને પ્રભાવતી ના પૂડલા રે વિચાર વળી વઘારી જમજો મારા વાલ માતા માતા વામાદે બોલાવે જમવા પાર્શ્વને રે રુચિ રતા ને વળી રૂડા પાપડ પીરસ્યા રે ચતુરાઈ ચોખા ઓસાવી આણ્યા ભરપૂર ઉપર ઇન્દ્ર દમનના દૂધ તાપે તાતુરમાં પ્રીતે પીરસ્યું જમજો જગ જીવન સુર નૂર માતા વામાદે બોલાવે જમવા પાર્શ્વને રે તત્વ તંબોળ લીધા શિયળ ને સોપારી સાથ અક્કલ ઇલાયચી આપીને માતા મુખ વધે રે ત્રિભુવન તારી તરજો જગ જીવન જગન્નાથ માતા વામાદે બોલાવે જમવા પાર્શ્વને રે પ્રભુના થાળ તણા જે ગુણ ગાવે ને સાંભળે રે વેદ વેદાંતર સમજે જ્ઞાની તે કહેવાય ગુરુ ગુમાન વિજયનો શિષ્ય કહે શિર નામીને રે સદા સૌભાગ્ય વિજય ગાયે ગીત સદાય માતા વામાદે બોલાવે જમવા પાર્શ્વને રે પ્રીતે પાણી પીધા પ્રભાવતી ના હાથથી રે માતા વામાદે બોલાવે જમવા પાર્શ્વને રે સંભળાયું? હા, સરસ હતું અનુમોદના. થેન્ક યુ એવરીવન. તો આપણે અહીંયા આપણે આજનું પોષ દસમીની આરાધના સમાપ્ત કરીએ છીએ. થેન્ક યુ. ખાવાનું ખાઈ લે પછી પૂજાનું કપડા પહેરીને જઈશું. બેરામ પૂછ્યો કે આગે નીકળવું છે.